The emergency is a black spot on India's history and democracy, says Prime Minister Modi addressing the Indian diaspora in Munich on the sidelines of the G7 summit. In UP, the BJP wins in SP strongholds of Rampur and Azamgarh, the seats vacated by Akhilesh Yadav and Azam Khan. In Delhi, AAP's Durgesh Pathak wins from Rajinder Nagar, but AAP loses Bhagwant Mann seat in the Punjab Bypolls. Now there's 0 in the Lok Sabha. The Maharashtra rebel MLAs take the battle for the Sena's control to the Supreme Court. The Shinde faction moves the Supreme Court over their disqualifications. Another Maharashtra minister lands in Assam's Guwahati, joins the rebel MLAs. The Sena threatens to take action against these rebel MLAs. They're likely to lose their portfolios, and the governor steps in, seeks police protection for rebel MLAs and their families. As the second largest city of Assam remains inundated, family members of flood victims unable to even cremate or bury their family members. Most crematoriums in Silchar filled with flood water. A special report. Hello and welcome. You're watching the news at 8. I'm Sarah Jacob. Those were the headlines. Let's get deep into the top story right now. The power tussle between the Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray and the Shiv Sena rebel Eknath Shinde is only intensifying. The Maharashtra rebel MLAs are now taking the battle for the control of this party to the Supreme Court. They have challenged also the appointment of Ajay Chaudhary as the Shiv Sena legislative party leader and the rejection of a no confidence motion against the deputy speaker. But Arvind Gunasekar is monitoring all of these legal developments now. Arvind, seems like both sides are lawyering up, and it's now over to the interpretation of the Supreme Court as to what the Constitution says about disqualifications. Yeah, Sarah, Supreme Court will be hearing the pleas of the rebels, the Shiv Sena rebels led by Eknath Shinde tomorrow. So 2 petitions have been filed one by Eknath Shinde, who is heading this entire rebellion against Uddhav Thackeray, and also another petition by the 15 other rebel MLAs against whom the Deputy Speaker has issued no disqualification notices against them. So there are 3 very important prayers that both the petitions are asking for. One, they're asking for the stay of the disqualification proceedings. Earlier, Uddhav Thackeray faction has filed the disqualification plea against all the 16 rebel MLAs, including Eknath Shinde, and the Deputy Speaker has issued notices on the disqualification plea, asking the rebel MLAs to respond to the plea by Monday 5:30 p.m. So they are seeking a stay on this disqualification plea. The second very important prayer by Eknath Shinde is that Uddhav Thackeray faction has replaced Eknath Shinde with Ajay Chaudhary as the Shiv Sena legislative party leader. He is calling that as illegal, saying that only less than 35% of Shiv Sena MLAs have agreed to this particular appointment, and that's why that is without majority. That this particular appointment has been cleared with the minority support, and that's why that particular appointment should be rejected. So that's the second prayer of Eknath Shinde. The third very important prayer is that till the no confidence motion that has been moved against the Deputy Speaker is settled, the Deputy Speaker should not proceed ahead with this disqualification plea. That's the third very important prayer. The fourth prayer is regarding the protection or the security for the rebel MLAs. In fact, Eknath Shinde, along with the 15 other rebel MLAs, have said that they and their family members are facing security threat in Maharashtra, and that's why they are seeking a direction to the Maharashtra government to provide adequate security to their family members. So 2 very important pleas have been filed by the rebel MLAs, and Supreme Court tomorrow afternoon will be hearing this petition because Supreme Court has accepted this petition, and Supreme Court will hear the petition tomorrow. All right, so it's going to be a busy day in this battle for the control of the Sena being fought on many fronts. In the Shiv Sena also planning to take action against Eknath Shinde and the other rebel ministers, and many of them could be hit where it hurts. Their portfolios taken away from them, and in an open challenge to rebels, Aditya Thackeray has asked them to defect and fight the elections. That's not all. The governor has stepped in. Arvind there mentioned those fears for security. The governor now stepping in, calling for security for the MLAs and their families. Saurav Gupta also monitoring this story. So Saurav, we actually are seeing a different side to Aditya Thackeray. The Sena certainly does not
not willing to call it quits yet. In fact, they seem to be upping the ante against these rebels. That's right. You know, in uncharacteristically aggressive Aditya Thackeray, very uncharacteristic of them to be, so aggressive. But yes, this is of course a moment of reckoning for the Thackerays, given the fact that they've actually seemingly losing control of the party, and that's something that's playing on their minds, which is why with, of course, the backing of the rank and file of the party, they are going after the rebel MLAs. Now, what can the rebel MLAs do? Can they seize control of the party? Well, that's something that the courts will decide. That battle is likely to head to the courts. But more importantly is what kind of control or impact will the rebel MLAs have on the MVA government, which seems to be on shaky ground at this point because of the rebellion that the Shiv Sena MLAs have conducted, led by Eknath Shinde. So lots of angry slogans against Eknath Shinde by Shiv Seniks on the street. And this is likely to continue over the next few days, which is why you have the governor wading in now, writing that letter to the DGP. But at the end of the day, one must also understand these are MLAs who fled their state. They've run away from their state. They're not here. For example, the agriculture minister, at a time when rains are delayed and farmers are worried, he is sitting in a 5-star hotel in Guwahati enjoying his time. In fact, that's what Aditya Thackeray said. Their food bill is 7 to 8 lakh. I'm not even going into the rest. So obviously, Thackerays are not taking the rebellion lightly. They are going after the rebels, but the rebels also literally don't want to let go of the Thackeray name. They want the Thackeray legacy without the Thackerays, which is something that seems quite at this point unattainable, given that Uddhav Thackeray and Aditya Thackeray are not going anywhere without a fight. They'll fight till the last moment. And they say even if all these MLAs go, it's good. They can start from scratch. It'll be a cleansing of the party of sorts, they say. So obviously, no side is willing to actually budge at this point, digging their heels in. And Aditya Thackeray very, very aggressively targeting the rebels, even going on to say that, look, Eknath Shinde was offered the chief minister's post. He was offered a Shiv Sainik CM post, but he refused that and wants to join hands with the BJP. The Thackeray is also underlining that several of the MLAs within the rebel camp are now worried about merging with the BJP, because that would mean they would be no longer a single party. They would be completely under the BJP, and that's something that that's why you don't see them moving, correct, yet to stake claim, because they're worried that their ranks, even though the MLAs are there, may not actually all vote for them. So that's something that's a worry for the rebel camp as well. So is that why sort of you say that the Thackerays are not giving up without a fight? Is that where their hope or their confidence is coming from? The fact that there are some Sena rebels who would be against joining hands with the BJP, and so we're hearing some your sources telling you that some of the 20, at least some 20 rebels are still in touch with the Thackeray camp. That's right, Sarah. It's important to note that one cannot imagine a Shiv Sena without the Thackerays. It was set up by Balasaheb Thackeray. It's been administered by Uddhav Thackeray so long, and it was Balasaheb Thackeray who brought Aditya Thackeray into politics. In fact, when Balasaheb Thackeray during his last days had also released messages saying, asking Shiv Seniks to take care of Aditya Thackeray and Uddhav Thackeray just like they had taken care of him. And the Shiv Seniks connect to that message. So irrespective of what the rebels may say, they of course are worried that without a Thackeray, the party is practically impossible to run. And Eknath Shinde, which is why wants to keep, is thinking of a new name that involves the name of Balasaheb Thackeray. But the fact is that it is the family, the Thackeray family, that are the fulcrum around which the party revolves. And there is a rebellion. And why is that rebellion there? Because Aditya Thackeray is someone who's seen as a leader of the future. Eknath Shinde pretty much now is of course considered a has-been in the Shiv Sena, even though till very recently, till of course the rebellion, he was the number 2.
All right, Saurav Gupta reporting there, but it's on that mutiny that seems to continue to grow, because today we saw the Maharashtra Minister Uday Samant landing in Assam's Guwahati, joining hands with the rebel MLAs. He now becomes then the 9th minister to join the Eknath Shinde camp, the Maharashtra Minister of Higher and Technical Education, now joining the Shinde faction in, I beg your pardon, Guwahati. And Prime Minister Modi has addressed the Indian diaspora in Munich in Germany, saying that the emergency was a black spot on India's vibrant history of democracy. Prime Minister Modi is in Munich on a 2-day visit to Germany to attend the G7 summit, which is expected to discuss issues like energy, food security, counter-terrorism, the environment and democracy with leaders of a powerful bloc. हमारा गौरव है जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है। आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी, भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। And the other big story today, the bypoll results of 3 Lok Sabha and 7 assembly seats across 5 states and Delhi were out, and they've made headlines. First in UP, the BJP has won from the SP strongholds of Rampur, Azamgarh and Azamgarh. The SP losing the seats vacated by Akhilesh Yadav and Azam Khan. That's in UP's Rampur. The BJP candidate Ghanshyam Lodhi won with a margin of over 40,000 votes. In Azamgarh too, the BJP candidate beat his nearest rival Dharmendra Yadav of the Samajwadi Party. Those bypolls necessitated due to the resignations of the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and the party leader Azam Khan from Azamgarh and Rampur respectively. जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। सर, अभी जब आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो आप कार्यकर्ताओं को समझा भी रहे थे और बता भी रहे थे किस तरीके से आप कह रहे थे कि मतदान वाले दिन वोट नहीं डालने दिया गया। हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी बताइए ताकि वो आपकी बात जो आपका मत है वो सब। वोट तो इस तरह नहीं डालने दिया गया कि जो वोट डला है उनकी हिम्मत को और उनके हौसले को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जितना मार सकते थे, जितना अपमानित कर सकते थे, जितना महिलाओं को, बुजुर्गों को दौड़ा सकते थे, गालियां दे सकते थे, जितनी गलीज भाषा का इस्तेमाल हो सकता था, न सुनाएं आप, न दिखाएं आप, वो आपकी मर्जी है। दाढ़ियों पर हाथ डाले गए, टोपियों पर हाथ डाले गए, ठोकरों से मारा गया। फोटो छपे हैं ठोकरों से मारते हुए, इंस्पेक्टर साहब ठोकरों से मार रहे हैं और गला दबा रहे हैं, गला घोट कर उसको, और एलानिया कह रहे हैं बस्तियों में जाकर के खबरदार कोई वोट डालने नहीं निकले। लिहाजा पूरी बस्तियां वोट डालने नहीं निकली, इसलिए कि यहाँ बहुत कमज़ोर लोग हैं। उनकी कमज़ोरी की वजह है हमने दोहरी गुलामी सही है, अंग्रेज़ों की भी और नवाबों की भी।
नवाब ने और अंग्रेज ने मिलकर इस रामपुर को बिल्कुल फनाह बर्बाद कर दिया था। उससे सब कुछ लूट लिया था। उसने पैसा लूटा, उसने अरमान लूटे, उसने इज्जतें लूटी, उसने पगड़ियां लूटी, उसने शर्म और हया लूटी, यहाँ की कुछ नहीं छोड़ा था। उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमने शुरुआत की, लेकिन हम क्योंकि अंग्रेज़ों के वक्त में थे नहीं, लिहाजा उनसे लड़ नहीं सके। लेकिन नवाबों के वक्त में तो थे, उनसे लड़े। लेकिन ये नहीं समझते थे कि हमारे अजदाद जो अंग्रेज़ों से लड़े थे और हम अंग्रेज़ों के इन एजेंटों से लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले भी हमारे ही कबीले के लोग होंगे, हमारे ही काफ़िले के लोग होंगे, हमारे ही वतन के लोग होंगे। ये नहीं सोचा था। सोचा था वतन आज़ाद हुआ है, हम पाकिस्तान नहीं गए हैं, इसे ही हमने वतन माना है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं था कि आप पाकिस्तान चले जाएं, आप नहीं जा सकते थे, लेकिन हम तो जा सकते थे, फिर भी नहीं गए, ताकि हमारे बच्चों को फ़ौजों में भर्ती किया जाए, वो वतन की सरहदों की हिफाजत करें। आपने वो मौका नहीं दिया। हम चाहते थे कि हम आपके दफ्तर में पानी का गिलास आपको पिलाएं, चपरासी बना लें आपने हमें वो भी नहीं बनाया। आप हमें पढ़ने दें तो आपने हमारे इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिए, रौंद डाला उन्हें अपने बूटों के नीचे से। तो आखिर आज़ादी का क्या हिस्सा मिला हमको? आज़ादी के बाद जो कड़वा जीवन हम गुजार रहे हैं, सब तो जितने आजिज़ हैं अपने आप से, जितने परेशान हैं, जितने दुखी हैं, तो क्या सिर्फ एक ख़ास धर्म का होने की वजह से हमारे साथ ये गिरना है? चुनाव के दिन आधार कार्ड से वोट सिर्फ मुसलमानों को नहीं डालने दिया गया, सिर्फ मुसलमानों को ही 151 में बंद किया गया, सिर्फ मुसलमानों पर ही डंडे पड़े, सिर्फ मुसलमानों ही की टोपी और दाढ़ी पर हाथ गया, सिर्फ मुसलमानों पर ही ठोकरें मारी गई। आप कोई एक नाम बता दीजिए, पूरे ज़िले में कोई एक इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जो इस बदनसीब मुसलमान के अलावा भी किसी पर गुजरा हो। किसी एक का नाम बता दीजिए तो हम अपनी सारी शिकायत वापस ले लेंगे। तो दुख क्यों नहीं होगा? क्या लोकतंत्र के इस पर्व में किसी से गलती नहीं हुई होगी? सारी खताएं हमारी हैं, सारे गुनाह हमारे ही हैं, सारे इल्जाम चोरी डकैती के हम पर ही हैं। हम ही मुर्गी के डकैत, हम ही बकरी के डकैत, हम ही किताबों के डकैत, हम ही फर्नीचर के डकैत, हम ही भैंस के डकैत। मैंने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चे ने वजीर रहते हुए शराब की दुकान लूटी है, 16,900 रुपया गले से लूटा है एक मिनिस्टर ने, जिस पर सैकड़ों मुकदमे होने के बावजूद भी, इतनी नाइंसाफी के बावजूद भी, एक मुकदमा भी करप्शन का नहीं है, रिश्वत लेने का नहीं है, एक भी। तो जब ऐसे दामन वालों के साथ ऐसा हो रहा है, आपने देखा है, गली में रहता हूं, एक छोटा सा घुटा हुआ सा घर है जिसमें हवा का गुजर भी नहीं है, उसके साथ जब ये हो रहा है तो कहाँ क्या हो रहा है? तो हम तो अपनी मर्जी से नहीं गए पाकिस्तान, क्योंकि हमारे और आपके रिश्ते ऐसे थे कि हमें नहीं जाना चाहिए था। And it was a bittersweet day for the Aam Aadmi Party. Well, they won in Delhi's Rajinder Nagar bypoll by over 11,000 votes in the wake of the AAP leader Raghav Chadda leaving the seat after being elected to the Rajya Sabha. The Aam Aadmi Party faced a huge defeat in the Punjab by-elections with the Shiromani Akali Dal Amritsar candidate Simranjeet Singh Mann defeating the ruling party's candidate on a Lok Sabha seat held last by the Chief Minister Bhagwant Mann. With this, the AAP will have no MP in the lower house of Parliament. A big political upset for AAP in Punjab just months after party's landslide win in assembly polls. AAP lost Sangrur bypoll to Shiromani Akali Dal Amritsar chief Simranjeet Singh Mann, a seat won by CM Bhagwant Mann in 2014 and 2019 amid Modi wave. बड़े चेर बाद श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ बीजेपी RSS ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦਾ
ਲੱਖ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। The former IPS officer who had resigned in protest against Operation Blue Star in 1984 had not won a single election since 1999 when he had wrested the Sangrur parliamentary seat. Probable reasons for Mann's surprising victory are inaccessibility of local legislators of AAP. Slain singer Sidhu Moosewala had supported Mann before the polls, and Moosewala's supporters blamed AAP for withdrawing his security. Mann gained prominence after being runner-up in Azamgarh assembly seat in assembly polls. Weak candidate by AAP, a little-known Sarpanch Gurmail Singh was fielded by the party. AAP leaders say that the party is still new in office, and once the government starts delivering on its promises, then even the voters will show their confidence. हमारा मानना है कि जब पंजाब की सरकार के काम शुरू होंगे, ज़मीन पे वो काम आने वाले 6 महीने में दिखने लगेंगे, तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान का करिश्मा हो और हमारे एक दूसरे साधारण कार्यकर्ता हो, तो उसके अंदर तो फ़र्क रहता है। मान साहब की पॉपुलैरिटी के साथ हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, मगर इतना ज़रूर है कि ये जो चूक हुई है ये ना होती तो अच्छा था। The entry of Simranjit Singh Mann into the parliament proves that despite the decline of Badal's Leda Akali Dal, there is still some space for Panthik politics in Punjab. But it was firecrackers for AAP in Delhi, which continued its winning streak in Delhi today with its candidate Durgesh Pathak winning West Delhi's Rajinder Nagar bypoll with a margin of over 11,000 votes against BJP candidate Rajesh Bhatia. The seat fell vacant after Aam Aadmi Party MLA Raghav Chadha resigned and got elected to the Rajya Sabha from Punjab. मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद दूंगा। ये जीत उनकी जीत है, उनके द्वारा कराए गए कामों की जीत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। देखिए, अब तो मैं सबके दिलों में बसता हूँ। अब तो मुझसे ज्यादा स्थानिक तो कोई है ही नहीं। अब तो मैं लोगों के दिलों में बसता हूँ। लोगों के दिलों में मैंने घर बना लिया। AAP holds majority in the assembly with 62 out of 70 seats. So the power structure of Delhi will remain unaffected by the bypoll results. But the bypolls are key to assessing the public mood ahead of the municipal elections that are likely to take place next year. With Mohammad Ghazali in Punjab and camera person Mohammad Mursalan in New Delhi, this is Sukirti Dwivedi for NDTV. And as about 40 MLAs receive 5-star treatment in Assam, the situation on the ground remains grim. Over 40 lakh people have been affected by the floods, many thousands of them homeless. We bring you a special report after the break. Welcome back. Now, the flood situation in Assam remains grim with over 40 lakh people affected in 34 districts of the state. Silchar is among the worst affected areas. 4 more lives have been lost in the last 24 hours, taking the toll up to 121. 25 lakh people are still affected in 25 districts. Silchar town still flooded, cut off for the 6th day. The administration there is now using drones to deliver essentials in flood affected areas. On the 6th day after massive floods, the flood-ravaged Assam still is trying to recover. Silchar is the second largest town where we have been reporting and we have been showing you the flood situation. But what about the victims? What about the people who have lost their everything? We are here at a relief camp in Silchar and we'll try and show you the situation like. We have come to a school, a government school that has been converted now into a relief camp. So we'll try to show you the situation that is here prevailing as far as the relief camps are concerned, the concerns of all of these people who are living here, leaving their homes behind, still inundated. दीदी आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम तारापुर के रहने वाले हैं, तारापुर MM रोड का रहने वाले। सर हमारे घर पे एक भी सामान नहीं बचा, कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह भी हम बाहर कर नहीं सके। जितना सामान है सब पानी में डूब रहा है। अब हम जाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे पेपर बनाएंगे, हमारा बहुत तकलीफ हो गया। यहाँ पे आए हम 24 फैमिली एक ही साथ रहते हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। पानी जो था तो अभी वो पानी में कीड़ा लग गया है। आता है कोई कोई देता है तो पीते हैं, नहीं देता है तो नहीं पीते। बस बच्चे उच्चे लेकर किसी तरह से जीवन बसर कर रहे। लगता नहीं हम 1-2 महीना में घर जा सकते, घर पे जाके घर पे भी रह नहीं सकेंगे। तो सारी जिंदगी की जो कमाई थी सब खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। हमारे थोड़ा भी पूंजी नहीं बचा। यहाँ तक कि बच्चे का हर सामान सब
पानी में डूब गया। बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट, हमारा वोटर ID, पैन कार्ड सब खत्म हो गया। हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करें? कोई मदद करने आ रहा है यहाँ पर आपकी? आप रुके हुए यहाँ पर? यहाँ पर तो आता है, कोई कोई देता है सर, तो इतना सब है, सब मुसीबती है, सब कोई जाता है उसमें, किसी को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है सर। फिर हमारे जो सर है वो अपना अंडर पे लेके आया तो हम लोग को दिया। बहुत आप बताइए कहाँ के रहने वाले? एक ही जगह का हम लोग सब। आपका नाम? देवी वाल्मीकि। आपका नाम? कविता सिंह। अच्छा, तो दीदी जी यहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो रिलीफ कैंप की है आप बताना चाहिए, क्या इशू? यहाँ हम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी के लेके है। पानी से कीड़ा निकल रहा, बच्चे लोग नहा रहे नहीं सक रहे, हम लोग भी वहाँ से पानी उन लोग को यहाँ से मांग मांग के ला रहे हैं। 1 कलसी 2 कलसी हम लोग को दे रहे हैं बस। धोने का पानी कीड़ा लगा, लेटरिन बाथरूम भी हम लोग जा नहीं सक रहे, पानी के बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। आज हम 3 दिन से नहाए नहीं। हाँ, नहाने मुँह धोने का नहीं हो रहा तो नहाए कहाँ से? पानी का बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है हम लोग को। बहुत तकलीफ। खाने की दवाई तो नहीं आ रहा अभी तक नहीं है। बच्चे एक बच्चे का देखिए ना, छोटा बच्चा का बुखार उठा हुआ है, फिर और ऐसे बच्चे के लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई। दीदी बच्चे को बुखार है, क्या हुआ? पानी सर, पानी से बुखार, बीमार हो गया पानी से जी। तो क्या मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं? तारापुर के। तो सब कुछ बचा है आपके घर का? नहीं, सब यहाँ पे हम इतना पानी है घर पे, बस खाने का बर्तन, बस कपड़ा, सब एक जगह के हैं, एक ही फैमिली। तो कुछ अगर बचा नहीं है तो अब आप लोग कैसे अपनी जिंदगी को दोबारा रिस्टार्ट करेंगे? जो लेके आए, जो 2 बर्तन वही है बस। 2 बर्तन लाए, जो लाए जितना बचा पाए बस वही, और कहाँ घर पूरा डूब गया है। पूरा इलेक्ट्रिक के आइटम जो भी थे, फ्रिज वगैरह, वो तो खत्म हो गया, वो बचा नहीं कुछ। अब सर्वे करने जाएंगे तो इसे देख पाएंगे। हाँ, बच्चा कितना छोटा है बच्चा? 11 महीने का। 11 महीने का है, बुखार हो रहा है बता रहे हैं। तो कोई दवाइयाँ वगैरह देने आए हैं? नहीं, कोई नहीं है, हमने खरीद के खिलाया। खरीद के खिलाया। तो और कोई डॉक्टर वगैरह है यहाँ पर? जी नहीं, कोई नहीं आता सर, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। सुविधा नहीं। तो आपको अगर कुछ चीजें चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरत किस चीजों की है इस वक्त? पानी के अलावा? पानी तो है, उसके अलावा? पानी तो है सर, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई बच्चा भी तो सब ऐसे ही है सर, जो बड़े खाते वही बच्चे खाते, एक्स्ट्रा कुछ भी तो बच्चे के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। Meanwhile, at least 40 MLAs continue to be feted with 5-star hospitality in that 5-star hotel in Assam. And the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma accused of aiding a coup against the Maharashtra Chief Minister by housing these rebel Shiv Sena MLAs in Guwahati. Today once again brushed off allegations that he was more focused on Operation Lotus, saying that his priority was the people of Assam.